एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फिलिक प्रग्नेश। और आप जैसे कि देख सकते हैं वी आर राइट नाउ हियर इन गोवा। सो हम 4-5 दिन के लिए टूर पे आए हैं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच टिल द एंड। पूरा व्लॉग हम शूट करेंगे जैसे कि मैं कर सकता हूँ। सो आप पूरा व्लॉग देखिएगा और हम सब एंजॉय करेंगे। सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। ओके, सो अभी मैं आपको जस्ट हमने चेक इन किया है। सो अभी थोड़ा बहुत देख के फिर आपको अच्छा वाला रूम टूर हम कराएंगे। फिर बाहर घूमने जाएंगे बीच। यहाँ पे हमारे होटल के नज़दीक में ही होटल के ही बहुत करीब में ही एक बीच है। सो हम वहाँ पे भी जा रहे हैं। सो जस्ट जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। Hey my Felix, so get ready with us in a Goa day 1. So it's a beach day and I tried beach outfit from Zudio and now I applied hair wax and comb my hair, and this watch is given by Drashti on our engagement. So I am wearing that and also wearing this black leather bracelet on my hand, and to complete my look I wear this silver ring. So yes, this is how my outfit looks like. And Drashti is also getting ready with me, so she is applying lipstick. And this outfit of Drashti is from local store. And yes, this is how our outfit looks like. It's a relaxing beach day, so yes, let's go on the beach. So this is how our room looks like. So यहाँ पे बेड है, so यहाँ पे केटल है और यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत चाय पी ली थी, तो यहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये टीवी है जो चल नहीं रहा है फिलहाल। यहाँ पे मेरा फ़ोन चार्जिंग पे है और ये सब कॉफ़ी एरिया है। हमने यहाँ पे बैठ के चाय पानी पिया था। और यहाँ पे एक छोटा सा मिनी फ्रिज है, आप सब देख सकते हैं एज यू कैन सी। और आते ही दृष्टि ने यहाँ पे सारी वैनिटी सब कुछ अपना सामान यहाँ पे रख दिया था। मेरा मेकअप है और मैंने रूम में आते ही पहले मेरे मेकअप का सामान अच्छे से रख दिया। ये मेरी इयररिंग्स है, देखो ये सब मेरी इयररिंग्स है। ये लिपस्टिक है, मैंने पॉलिश है, इसमें वॉच है, इसमें स्प्रे है। और ख़ास मैंने ये पंजाबी चूड़ा लिया है क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई है, इसलिए मैंने पंजाबी चूड़ा भी लिया है साथ में।
इससे फोटो लुक अच्छा आता है, इसलिए मैंने लिया है। और हेयर डायर भी लिया है, क्योंकि इधर कपड़े सूखे या ना सूखे, इसलिए हेयर डायर भी हम लेकर आए हैं। सो दिस इज हाउ आवर रूम लुक्स लाइक। यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर है, ये हमारा लगेज बैग है। यहाँ पे मेन्यू है, यहाँ पे एक अच्छी खासी पेंटिंग है, और यहाँ पे हमारा वार्डरोब है जो हमने अभी फिलअप नहीं किया है। अब हम फ्री होके वो बैग में से निकाल के वहाँ पे फिलअप कर देंगे। यहाँ पे वॉशरूम एरिया है, एज यू गाइस कैन सी दिस इज हाउ आवर वॉशरूम लुक्स लाइक। अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। दिस इज हाउ आवर वॉश एरिया लुक लाइक। So this is our small room. चेक इन किया और लंच किया, और हमारे होटल के पास पे ही कलंगट बीच था, तो वहाँ पे भी गए थे। शाम को भी गए थे और डिनर के बाद रात को भी गए थे, वहाँ पे भी एंजॉय किया। और बस बहुत एंजॉय किया। दिस इज़ डे 1 इन आवर गोवा, और रिलैक्सिंग डे था। और हम कल वाटर एक्टिविटी के लिए जाने वाले हैं। सो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 फॉर माई गोवा व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक